Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Stylam Limited Q1 FY23 earnings conference call hosted by Systematix Institutional Equities. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Ashish Poddar from Systematix Institutional Equities. Thank you, and over to you, sir. Yeah, thanks, Melissa. Good afternoon, everyone. It gives us immense pleasure to host the senior management of Stylam Industries post the Q1 FY23. So from the management, we have Mr. Jagdish Gupta, Managing Director, Mr. Manoj Gupta and Mr. Manav Gupta, whole-time directors, and Mr. Kishan Nagpal, the Chief Financial Officer. I request Mr. Jagdish Gupta to give an opening remark, post which we'll start the Q&A session. Over to you, sir. Hello, good afternoon to everyone. Thank you everyone for taking out your valuable time for attending the Q1 23 Stylam Industry Investor Conference call. Excuse me, sir. Sorry. Sir, I'm sorry to interrupt. The audio is low from your line, sir. If you could speak into the phone. I'm speaking from the phone only. Maybe we have two phones. Hello. Just hello. Yes, it's much better, sir. Thank you. Please Better? Okay. Yes, thank you. I'm Jagdish Gupta, Managing Director of Stylam Industry. Along with me, Manoj Gupta and Manav, both directors, and Mr. Kishan Nagpal, CFO. I presume that every one of you would have gone through our numbers in detail. First of all, I would like to give the customary disclaimer that this call is to discuss company's historical numbers and future prospectus. Let me still brief you all the key highlights in Q1. After delivering good record sale in Q1 23, it gives me immense pleasure to share that we have achieved a new record sale of 235 crore revenue in a single quarter, which is the highest till date. As the prices of raw material still getting little soft, which helped the company to improve the margin and PAT. Our EBITDA margin is improved to 15.03 as compared to 11.02 in the last quarter, 22. Our net profit increased to 27.6 crore as compared to 19.03 in 22. Company has reached about 80% capacity utilization in laminates division only. We have started modular expansion into our existing facilities to increase our capacity by up to 30 to 40%. This will entail a total investment of approximately 40 crore. Still, ocean freight and other prices are still on little higher side, but we are hopeful that it will be maintain good margin in coming Q2 23 despite this. As far as 23 is concerned, we believe that shift from unorganized to organized will continue in our industry, and we stand to benefit with that shift. We think that we will end up gaining more market share by increasing our footprints in domestic as well as export markets. Now, I request moderator to take investors call. Ashishji, thank you very much. Hello. Sorry, sir. Melissa, you can open the floor for Q&A. Sure. Thank you. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may enter star and 1 on their touchtone telephone. If your questions have been answered and you wish to withdraw yourself from the queue, you may enter star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. To ask a question, you may enter star and 1. We have the first question from the line of Pritesh Chheda from Lucky Invest Managers. Please go ahead.
Yeah, sir, thank you for the opportunity. Sir, my question was in this 235 crore sale, have we booked anything on the solid surface side of the business? Yes. How much is the... Not much, maximum 3 to 4 crore. Okay. Can you help us at 80% utilization? What would be the laminate volume in the quarter? How much sheets you must have sold? Actually, I told you maybe many times we discussed about these things. Sheets, we can give you the number of sheets. 27 lakh sheet. But it again depends on the thickness of the sheet also. Yes. If thickness is less, sheets can be more. Okay. But 27 lakhs approximately. 27 lakh sheets. Okay. There is a substantial jump from 160, 170 crore run rate that you are doing in the business to 230. If you could throw some... 235. If you could throw some light on, where this jump has come from, sir? No, this jump is from both domestic as far as export is concerned. Both. Okay. If you go through, the export will be almost 180. 169. 170 and balance is 65 from domestic. 65 from domestic. Okay. And sir, lastly, if you could give some color on the melamine and the phenol prices as a raw material for us, where they were in the quarter 4 and how are they panning out for us on the pricing side? You see, every raw material is going softening day by day. Looks. जो हमारा सिस्टम है ना, जैसे अब ये सॉफ्टनिंग हुआ है, इट विल मोर इफेक्ट ऑन दिस कमिंग मंथ, मे बी इन दिस क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर, क्योंकि हमारी बुकिंग तो एडवांस हो जाती है ना, विच वी बाई फ्रॉम इम्पोर्ट. वी हैव टू प्लान फॉर 2 to 3 क्वार्टर. तो अभी तो हमारे बल्कि रादर जो ओल्ड रॉ मटेरियल आ रहा है, इट इज कमिंग ऑन ओल्ड प्राइसेस, विच वी बुक्ड लास्ट मंथ. इट विल कम नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ. It will have more effect on the profit in coming month. Okay. I think you understand what I mean. Yeah. So this तो अपना जो ये 300-400 basis points अभी भी gross margin पीछे चल रहा है. We were doing about 50% value addition. We are doing less than 50 today. Or let's say we were doing slightly less than 50 earlier, 48% जितना था, अभी 42-43 है. तो ये जो 3-4% का गैप है वो कवर हो जाएगा अभी आगे के क्वार्टर? काफी thinking positively, yes. Looks. Okay. And so last on the export side, how much of we do the entire business on CIF basis or FOB? How do we do it? It is now actually we are doing on CIF basis, but when the ocean freight increase, we are charging some different ocean freight. Okay. Difference of ocean freight, that is also going to reduce. जो भी freight कोई 800 था, 8000 हो गया, it is now 6000. So we are charging 6000 from the customer. So you do it on FOB or CIF? No, it is mostly CIF, but we are charging additional freight from them. Okay. Thank you, sir. I'll come back if I have more questions. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, to ask a question, you may enter star and 1. We have the next question from the line of Pranav Mehta from Equirus Securities. Please go ahead. Yeah, thank you for taking the question and congratulations on a very good set of numbers. Sir, I wanted to understand on the export business. So, are we seeing higher sheets, premium sheets going into the export market because your realization has improved quite well on the quarter-on-quarter basis? It's already start going more premium, and we are looking after more premium market. And in coming month, coming quarter, you will see the more different changes. Okay. So, sir, premium markets, I understand, would be US and Europe, right? No. It can be Far East also. Every market has a premium. Even if you go for a Middle East, even Gulf country, there are few customers for premium also, not all. In the other country, many people percentage-wise more for premium, but in small country also some are premium. We are getting that customer. Okay. And sir, how is as of now the demand holding up in the export market for you?
Are you getting the same queries from the export market? Let's say नहीं, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तभी तो सेल बढ़ी है. हाँ सर, बट सर एक्सपोर्ट मार्केट में अभी इन्फ्लेशन की वजह से जो होम प्राइसेस और इनोवेशन पे इम्पैक्ट होना चालू हो गया है, तो उसकी वजह से डू यू बिलीव कि आगे जाके थोड़ा एक्सपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकता है? हमने तो सुना वहाँ ज़्यादा लोग जितना दिख रहा है फ्रॉम इंडिया एवरी प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड. हर इंडस्ट्री में जो गैप था, बल्कि पीपल तो ज़्यादा रेनोवेशन करने लगे जो जिन्होंने 2-2.5 साल की नहीं थी. हमारे तो इफ यू गो थ्रू द फिगर्स आर टू मच इनकरेजिंग. ओके, ठीक है सर. और सर हमने डोमेस्टिक मार्केट में कैसे पेनिट्रेशन, मतलब हैव वी एडेड एनी डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इन 1Q, और ये पेनिट्रेशन कैसे चल रहा है वहाँ पे? जस्ट माय मानव गुप्ता विल ही इज लुकिंग आफ्टर डोमेस्टिक. Yes sir, you are audible, but yeah. So for our first, our distributors. So I'm sorry, sir, but we cannot hear you clearly, sir. Hello. Yes, it's better. Thank you. Yes. So as we were working for the last year to penetrate in the market. Hello. Yeah, so last year we were working to penetrate in the market, and we have built up our distributor and dealer network almost all over India, and our infrastructure has been all set. So now the work is going to for the influencer division. Our teams are working with influencers, and we are getting good penetration in the market. This quarter overall, because of instability in the overall world, the market was a little jittery, but we as a company, Stylam has done good in domestic market also, and I see with the good penetration and the team is working hard, it should go better, and our products are doing well. We will Okay sir. In the domestic market, in the home building material space very soon. Okay sir. And sir, as you highlighted in your opening remarks that you are seeing a shift from unorganized to organized in the domestic market, so do you think that this will continue once let's say the raw material cost starts going down, or are the unorganized people expected to be aggressive in the market once the RM pressure starts subsiding? Sorry again, please, little bit noisy. I could not understand your real question. सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो मार्केट शेयर का बोला ओपनिंग रिमार्क्स में कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज शिफ्ट हो रहा है, तो ये विद दिस कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, कि जैसे मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आना चालू होंगे तो अनऑर्गेनाइज वाले वापस एग्रेशन करना चालू कर देंगे? दैट इज नॉट अ मैटर. जब हमारे को जब प्राइसेस इंक्रीज हुई थी तब केड़ा हमने इंक्रीज मार्केट से इतनी हमें मिली है, वो भी हमने ऑब्जर्व की, तभी तो हमारा बिटा डाउन हुआ. अब जो प्राइसेस डिक्रीज होंगी लिटिल बिट स्लाइटली, ऑफ कोर्स वी हैव टू पास ऑन, but when there is a gap between previous and now, so there will be no much percentage problem. In domestically, our organized sector is increasing day by day. Okay sir, okay, thank you sir, that's it. Thank you. We have the next question from the line of Nikhil Gara from Abacus Asset Management. Please go ahead. Hi sir, thanks for the opportunity and congrats on a very good set of numbers. Sir, मेरा पहला सवाल सर एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग था. एक आपके अंदाज से we have done really well in exports, but how would the other players as in the industry from India itself would have done? Have we actually been able to capture more market in this particular quarter? नहीं, क्या मतलब, हम तो we are getting the market. You can see the figures. I could not understand your real actual question. नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि समझो अगर हम लोग we have grown at close to 70-80%,
जो एक्सपोर्ट का इंडस्ट्री है इंडिया से, वो भी सेम लेवल पे ग्रो किया है या हमने एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा किया है ये क्वार्टर में? नहीं देखो, मैं तो उनकी फिगर तो मेरे को आई डोंट नो देयर फिगर, बट ऑफ कोर्स वी इंक्रीज्ड, दैट वी नो। मे बी हमारी फिलॉसफी, स्ट्रेटजी, क्वालिटी, प्राइस डिफरेंट हो, ये तो आई कैन नॉट आंसर, दे कैन आंसर वेरी वेल, आवर डाटा विल शो। श्योर सर। तो इसमें अगर आप एक रीजन वाइज अगर आप बोल सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग ने इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर ज़्यादा अच्छा किया होगा? नहीं, हमारा तो हर जगह ही बढ़ रहा है। अब रादर वी आर वीक इन सम कंट्री वेयर वी आर गेटिंग, वहाँ भी हम स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। यूएस साइड वी आर लिटिल वीक, बाकी तो हमारा हर जगह यूरोप, फार ईस्ट, एवरी वेरी इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनेटली, नॉट सम एनी पर्टिकुलर मार्केट। अंडरस्टूड सर। और सर ये क्वार्टर में कुछ बैकलॉग था क्या लास्ट क्वार्टर का, जो ये क्वार्टर में हम लोग ने बुक किया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एक्सपोर्ट्स? नो नो नो, व्हाई? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट आस्किंग। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ओके सर, अंडरस्टूड। सेम थिंग्स आर गोइंग ऑन आल्सो। अंडरस्टूड। सो बेसिकली देन दिस सॉर्ट ऑफ जो ट्रेजेक्ट्री हमने अचीव किया है एक्सपोर्ट्स में, ये अभी ऐसा लग रहा है कि सस्टेन होगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट। यस 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 यस, वी जस्ट एट लीस्ट, यस श्योरली। अंडरस्टूड सर। सर इफ एनीथिंग तीसरा चौथा कोरोना ना आया तो। अच्छा नहीं सर, अंडरस्टूड। So then secondly on the domestic market, we have now achieved a base of 65-70 crores जो हम लोग I think last 3-4 क्वार्टर से अचीव कर रहे हैं। तो सर आई थिंक हमारा एम यहाँ पे था कि इसको एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 2 years 350-400 करोड़ का सॉर्ट ऑफ अचीव करना है। तो इसमें डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल दैट सेम? Yes, it is still undervalued, it will be possible, it will be rather more। क्योंकि पहले पता क्या होता है किसी बिजनेस में, if you go for our export journey also, same journey is domestically। पहले हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था इतना ज़्यादा, वी आर मोर फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट। नाउ वी हैव आफ्टर दिस न्यू प्लांट, देन कोरोना आ गया, जो फिगर कही है डेफिनेटली इट विल अचीव इन मे बी दिस और नेक्स्ट क्वार्टर श्योरली। समझ गया सर। एंड सर जस्ट 2 क्वेश्चंस ऑन दी फाइनेंशियल्स इटसेल्फ। फर्स्ट सर, ये हमारा जो अदर एक्सपेंसेस है आई थिंक ये क्वार्टर में करीब 50 करोड़ आया है। आई थिंक वो रन रेट अगर हम लोग देखें 35-40 करोड़ हुआ करता था। तो एनी स्पेसिफिक एक्सपेंस ये क्वार्टर में है जो ज़्यादा है या? एक्चुअली ओशन फ्रेट का होता है अदर एक्सपेंस में, जो ओशन फ्रेट जाता है हाँ वो इसके अंदर आ रहा है। ओशन फ्रेट लास्ट ईयर में भी आप देखेंगे इनिशियली तो 2-3 क्वार्टर के अंदर का ओशन फ्रेट बहुत कम था, आगे जाकर बहुत बढ़ गया। ओके, दैट इज ओनली ड्यू टू ओशन फ्रेट। मेनली ओशन फ्रेट का ज़्यादा। तो बेसिकली ये नंबर मतलब आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा कम हो सकता है? नो, ये कम हो रहे हैं अच्छा, डे बाई डे, क्योंकि ऐसे ज़्यादा इसलिए लग रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ गया, सेल बढ़ गई। सही बात है, सही बात है। और इसके अलावा जो हम लोग डोमेस्टिक में पुश कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, उसके रिलेटेड कोई ज्यादा एक्सपेंसेस ऐसा कुछ फिलहाल ऐसा कुछ? नहीं, बल्कि वो तो रादर ना जितना पुश कर रहे हैं एक्सपेंसेस विल गो डाउन, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी expenses will not go proportionately same, it will be reduced rather। और सर लास्टली करेंसी का कुछ इम्पैक्ट रहा है क्या? बिकॉज वी डू सो मच एक्सपोर्ट। वो नॉट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर रहेगा, पर इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वी आर इम्पोर्टिंग आल्सो ऑलमोस्ट 50-55%। yes, of course it will be beneficial। ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you। We have the next question from the line of Nikhil Agrawal from VT Capital. Please go ahead. Yeah. Good evening, sir. Thank you for the opportunity. So could you highlight on the price hike you've taken during the quarter in both the domestic markets and the export markets? Hello? Sorry? Yeah, so could you highlight on the price hike you've taken in the domestic market and the export market? Price hike? No. Export में there is we have hike in fourth quarter, not in this quarter much, because prices are already stabilized worldwide of raw material। Okay. Same thing domestically, rather तो जो unorganized sector है, they start reducing in domestic market due to okay।
So our prices are same like third quarter. Okay. And so basically, it's the value mix, the product mix that has led to the increase in realizations during the quarter. Correct. Okay. And sir, any revenue expectations like from the acrylic business in FY23? No. Acrylic business is already we did everything. Nothing. It is small, 1-2 crore. Second machine is under operational, and acrylic sale will definitely in this quarter will be increased lot. We already make distributors. Export is already started. Quality is well established in international as well as in domestic market. So there will be no any expenditure. No, sir. I was asking the expected revenue from the acrylic business division in FY23. Year or quarter? Sorry? Do you want in quarter or this quarter maybe definitely more than 10 crore? So 10 crore in Q2. Q2. And then FY23? 23 it can be 100 also. Okay, sir. And sir, any revenue and margin guidance overall? Overall उसमें acrylic में ना अभी हम उसका we cannot say anything. Expensive तो हो रहे हैं. Even then we are absorbing. अब जैसे volume बढ़ेगा, there will be cut in the production cost also as well as procurement of raw material also. नहीं सर, मैं overall बोल रहा हूँ, मतलब firm wide, not only acrylic, laminates and acrylic दोनों में. Overall तो expecting बढ़ेगा ही लग रहा है. अच्छा, कोई specific number, कोई percent? नंबर तो ऐसे है ना, कुछ नहीं पता. मैंने कहा भी पहले देखो लास्ट क्वार्टर में 11 था, 15 हो गया. अब जैसे सेल बढ़ेगी, सेल के नंबर बढ़ेंगे. रॉ मटेरियल आप खुद ही कह रहे हो कि गोइंग डाउन. जाके आएगा. Definitely it will be looks better. Okay. So sir, in the last quarter you had said कि revenue you are expecting value growth of around 30% in FY23. So do you still maintain that? 13%? Sorry? 30% का आप top line growth बोले थे in FY23. So do you maintain that? Why not? Definitely. Okay. Okay, sir. Can be more. Definitely. Okay. Great. And sir, just one last question, if it's not an issue. The recessionary trends that we are expecting in Europe and US, तो sir इससे कुछ demand आपका impact expected नहीं impact होगा? क्योंकि वो major market है आप लोगों का. बढ़ रही है हमारी sale day by day. तो कोई लग नहीं रहा. अच्छा, ठीक है sir. Okay. Thank you so much. That's it. Thank you. We have the next question from the line of Rishikesh Bhagat from Kotak Mutual Fund. Please go ahead. Yeah, hi. Thank you for the opportunity, sir. Sir, if पहला question domestic market related. So अगर मैं देखूँ, I think clearly we have done good job in terms of increasing presence. Just समझना था on the domestic market, have you कुछ recently price correction वगैरह हुए हैं क्या? In sense price correction or anything because of the input cost correction? We have not decreased the prices as of now, and we are not because organized companies have not decreased prices. Only unorganized companies, a little few unorganized companies have decreased prices. So definitely now, as our brand pool is getting stronger, we have no plans to decrease prices. Okay. And just on the input cost side, कितना अभी input cost में correction हुआ है? Say something like melamine or phenol for us compared to Q1, sorry. As I told earlier, the thing is that because we are importing and the effect is seen after 2 months or 3 months because the inventory is in pipeline. So definitely it should reflect in the other next quarter, hopefully. Okay. And sir, just on the domestic side, the portfolio side, is there any specific size where we are fairly dominant, something like 0.8 mm, 1 mm, or we are present across the segment? We are very good and strong in specialized products like exterior laminates, bathroom cubicles, and especially our acrylic solid surface. It is a first plant in India to be
manufactured by Orphan Technology. So we are good in the good products, architect's choice products. We are quite strong, and we hope that it will get better. Okay. And lastly, on the capacity expansion, where we are talking about, say, small, we are doing the investments of, say, 40 crore, 40 odd crore. Hello? Yeah, where we are looking at 40 crore investments and probably looking at capacity expansion of also 40%. So, अगर ये investment होने के बाद, fair to assume that we will be moving from, say, 14 million sheets current capacity to probably 18-19 million sheets. Is it a fair assumption? No, it is not. Listen, I will tell you. This cannot be. Everything is not. ये consider नहीं की जा सकती value की only quantity. मैंने पहले भी कई दफा बताया है. अगर वही शीट है 300 की भी बिक रही है, 1200 की भी बिक रही है, 1500 की भी बिक रही है. We are going for more value addition items. Okay. Okay. This is the main purpose. Okay. Okay. क्वांटिटी में कुछ नहीं होता. अगर आप कल को थिनर बनाने लग जाओ शीट टोटली, तो then from this even you can achieve 20% more. True. Got it. So, अगर say something like say high जो क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो, जो आप साइज की बात कर रहे हो, उस बेस में लाइक टू लाइक कितना होगा? जैसे 14 मिलियन शीट्स की अभी की कैपेसिटी है, विच इज बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑन सम साइज, तो कंपेयर टू दैट वो कहाँ तक जाएगी ये इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ करके? कितनी आप तो नहीं अपना मैं अच्छी तरह आपकी क्वेश्चन का आंसर समझ रहा हूँ, पर समझ नहीं रहा कैसे दूँ. आप कह रहे हो कैपेसिटी, हम तो टोटली इसकी रेवेन्यू को मैं कैलकुलेशन लगाता हूँ, मैं तो रेवेन्यू बेस पे ज़्यादा लगाता हूँ. नॉट ठीक है सर, वो भी हेल्पफुल हो रहेगा. तो कितना हो सकता है? हाँ, हो सकता है. जैसे हम तो ज़्यादा चाह रहे हैं इसमें जो भी है वैल्यू एडिशन वाली शीट बनाए, नॉट की चीपर क्वालिटी की. ये ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी वाइज में जो आप पूछ रहे हो 20-25% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी. Okay. But value base message it can be more than 40 also. Got it. Thank you. Thank you. We have the next question from the line of Kunal Bhatia from Dalal & Broacha. Please go ahead. Yes, sir. Thank you opportunity के लिए. Sir, in regards to यही सेम क्वेश्चन सर, वो हम जो 40 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है वो उनको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना दे सकता है सर? नहीं, वो तो तभी का है ना, वो 400-500 करोड़ का भी दे सकते हैं. नहीं, वही एक्सपेक्टेड है. वी गो फॉर ए, पहले हम सोच रहे थे वी शुड गो फॉर ए एक्सपेंशन, देन कम्युनिटी एक्सपेंशन करनी इज वेरी इजी. जैसे हमारा ब्रांड नेम इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डे बाई डे, इंडिया में भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, तो वी वांट टू गो फॉर मोर वैल्यू एडिशन थिंग्स. ओके. और सर वन बिजनेस क्वेश्चन सर, गिवन अ चॉइस आप कंफर्टेबल होंगे ज़्यादा बिजनेस डोमेस्टिक करने के लिए कि आप इंक्रीमेंटल बिजनेस आपको चाहिए कि इट शुड कम फ्रॉम ओवरसीज? क्योंकि अभी जिस तरह से बोथ. ओके. कभी भी देयर कैन नॉट बी ऑल एग इन वन बास्केट. तो क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट 2-3 साल में बिकॉज ऑफ कोविड और अदर रीजंस ऑफ फ्रेट, जिस हिसाब से बिजनेस वॉलेटिलिटी इन जनरल बिजनेसेस में आई है, आपको डोमेस्टिक बिजनेस कंपेयर टू दी ओवरसीज बिजनेस इंक्रीज नहीं करना? अगर आप देखो जितना मर्जी ओशन फ्रेट आया, इवन देन एवरीबॉडी स्टार्ट पेइंग ओशन फ्रेट फुल, तभी इंडिया इज मोर कम्पिटिटिव. अब यूएसए में 15,000 ओशन फ्रेट दे रहे हैं लोग, तभी भी लोग इंपोर्ट कर रहे हैं. नॉट ओनली लैमिनेट्स, अदर थिंग्स आल्सो. तो एक दफा साइकिल होता है स्टार्टिंग में. ओके. डिस्टर्बिंग लगता है जब इजीली एवरीथिंग अब्सॉर्ब्स. तो बोथ वे होगा. नॉट वी आर इंटरेस्टेड प्रोपोर्शनेटली भी दोनों चीज बराबर हो. ओके. और सर जो हमारी मेन कंट्रीज है कंपेयर्ड टू the local players there, in general, how much competitive we would be in pricing? We are competitive everywhere. नहीं सर, मतलब अंदाजा we would be say 50%, 15%, 20%, 30% cheaper. How would that be?
अगेन मैं क्या कम्पिटिटिव है, देखो हम वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन एक्सपोर्ट इन यूरोप मार्केट। जो कंट्री के जो कोई कंपनी एक्सपोर्ट यूरोप में कर रही है स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट ही विल बी कम्पिटिटिव एवरीवेयर। ओके ओके। तो प्राइस डिफरेंशियल हमारा वर्सेस अदर्स कितना रहेगा अंदाजा ऑन एन एवरेज? हुज वर्सेस Stylam वर्सेस अदर कंपनी इन यूरोप? वो तो देखो वो भी मैं नहीं उसका कह सकता कि किस टाइप का वो बेचते हैं, उसका कोई आंसर नहीं है। वो तो आपको जो EBITDA है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वही बता देगी। अगर आप कंपेयर दूसरों के बारे में करोगे, उनके बारे में मैं तो कमेंट्स नहीं दे सकता, ना मैं उनकी इनवाइट से देखता हूँ। ओके ओके। और सर ये अभी जो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है या वो अप्रोक्सीमेटली 80% तक है, तो कैन वी मूव अप टिल 100 और बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ शीट्स which we manufacture, some are high quality, this would be sort of a full utilization level? वो तो ऐसे है ना जी, फुल यूटिलाइजेशन तो ऐसे है ना 80 है, 100 के ऊपर ही जाने की कोशिश करेंगे। कैसे, हाउ कैन बी टू 110 और 115? लोग पूछेंगे भी 100 के ऊपर 110 कैसे होता है। हम चाहेंगे भी हम वी शुड रन इट 20-30 days a month, then capacity capability, how we can reduction in cycle time, that we will see later. Okay, so we are quite hopeful that it will increase percentage wise more. Okay okay। हाँ सर, मतलब मेरा क्वेश्चन शायद कुछ लोगों ने फोर्थ क्वार्टर में पूछे थे, तो वो कह रहे थे अचीव हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ तो मेरे को तो पता नहीं, लग रहा है अचीव हो जाएंगे। सेम थिंग जो क्वेश्चन अब कर रहे हो, मेरे को लग रहा है सारे अचीव हो जाएंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट आफ्टर 3 months वी विल डिस्कस अगेन ऑन दीज थिंग्स। Okay okay okay। Thank you sir and all the best to you sir। Thank you so much। Thank you very much। Thank you madam। Thank you। We have the next question from the line of Ankur Kumar from Alpha Capital. Please go ahead। Mr. Ankur Kumar, your line has been unmuted. Please go to question। This is the operator. If you are muted the line from your end, please unmute and speak। Mr. Ankur Kumar? Hello? Yes, please go ahead। Yeah, thank you for taking my question। Congrats for a good set of numbers। Sir, I just wanted to probe a little bit on the export side। जहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट जो शेयर था लास्ट 3 क्वार्टर में, वो 105, 1010, 1015 करोड़ पे स्टक था। इस क्वार्टर हमने काफ़ी बड़ा जंप किया वहाँ से, तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ एंड आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा हुआ बुरा हुआ? काफी अच्छा हुआ सर, मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ कि फिर और अच्छे की एक्सपेक्टेशन करो। नहीं तो आप ये पूछो क्यों हुआ, ये तो खुशी मनानी चाहिए हुआ। मैं तो ये कह सकता हूँ वी आर मेंटेनिंग दैट राइट नाउ आल्सो। तो ये देखो ना, आपकी कंपनी, आपकी हमारी सबकी कंपनी, इसकी रिकॉग्नाइजेशन वर्ल्ड में हो रही है ना। इसका मतलब इंडिया हमारे को नहीं एक्सेप्ट कर रहा। यू कैन सी अवर स्लोगन इज क्वालिटी यूरोपियन क्वालिटी ऑन इंडियन प्राइस, तब भी नहीं ले रहे हमारे से। इसका मतलब अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। मैं तो इतना कह रहा हूँ होपफुली अगर कोई चीज वर्ल्ड वाइड गड़बड़ ना हुई, इट विल इंक्रीज डेफिनेटली मोर। ये तो काफी अच्छी बात है सर। एंड सर डोमेस्टिक पे हम थोड़ा सा यहाँ स्टक हो गए 65 और वो तो कह लो हम लगा रहे हैं जोर, वहाँ कोई मुहूर्त मार्क निकालते हैं मार्केटिंग वाले से बैठ के, हवन कराते हैं। ये क्या बात है भाई कि अगर यूरोपियन हमारे को पसंद कर रहे हैं, इंडियन को हमारे से क्या नाराजगी होगी। हाँ जी, सोच रहे हैं उसके निकाल रहे हैं फार्मूले। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। Thank you very much। Thank you, our blessing। Thank you। We have the next question from the line of Pritesh Chheda from Lucky Investment Managers। Please go ahead। या सर, ये जो सर 235 करोड़ क्वार्टर में आया है, should we multiply by 4 to believe that you will achieve that kind of revenues for the Why it cannot be more than this? Why it cannot be? Because the way you have performed over years, Q1 can safely be annualized, तो इसीलिए मैं Q1 को multiply। हमारे हर क्वार्टर में देखोगे फर्स्ट क्वार्टर इज ऑलवेज लेसर देन 4 quarters। तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है सालों से।
तो यस यस। और सर इसमें लास्ट ईयर अपना ये जो सरफेस बिजनेस था वो कितना था और ये साल कितना होएगा? वही एक पिछले साल में तो 2 करोड़ भी नहीं होया होगा शायद सारे। ओके 2, 3, 4, 5 इस साल में आई ऑलरेडी मेंशन वी आर एक्सपेक्टिंग अप टू 100 आल्सो। एंड व्हाट विल अप टू 100 सर? उसके लिए यू हैव टू हैव समथिंग विथ यू इन टर्म्स ऑफ confirmed orders or something? नहीं वो हो चुका है हमारे टोटल। हम डोमेस्टिक मार्केट में टोटल डिस्ट्रीब्यूटर C&F स्टॉक फॉर द लास्ट 1 month rather you can say from the July onward. This relic is available on कितनी branches है? 4 branches. It already you can go to Delhi, Calcutta, Bangalore. Bangalore. You can go anywhere. You can find maybe Granex is available in the market. Okay. जब शुरुआत होती है जब उसके बाद जंप इमीडिएट मिलता है, which we are quite hopeful. और सर वो जो दूसरी मशीन आनी थी एक्रेलिक में वो कब आएगी? वेरी नाइस। वो तो लगनी शुरू हुई है, तभी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसकी एक मशीन का पार्ट ड्यू टू कोविड की वजह से है। मशीन इज ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर वेटिंग 99% इट विल बी ऑपरेशनल विद इन 2 months. तो सर हमारी पहली मशीन फुली ऑपरेशनल है नहीं, तो ये दूसरी मशीन का रिक्वायरमेंट क्यों है? वो तो हमने पहले ही बना लिया था ना, वो तो बाई चांस कोविड आ गया। वी नो द मार्केट। इंडिया इज इम्पोर्टिंग मोर देन 800 crore फर्स्ट ईयर। मार्केट इज ग्रोइंग एवरी डे। कोरिया इज स्मॉल कंट्री एक्सपोर्टिंग वर्ल्ड वाइड। देयर इज मोर देन 100 machines लाइक दिस। तो सर आप व्हाइट लेबलिंग क्यों नहीं करते सर? एक्सपोर्ट में OEM नहीं दो, हाँ मतलब 800 करोड़ का माल अगर इंपोर्ट करके आ रहा है किसी ब्रांड में तो उसी का व्हाइट लेबलिंग करके हम नहीं बेच सकते उनको? नहीं वो हम क्यों नहीं चाहते, जब हमारा अपना ब्रांड है ग्रैंड है। हम अगर OEM करेंगे तो एक्सपोर्ट में करेंगे, व्हाई नॉट इन डोमेस्टिक मार्केट? ओके वो तो एक लेके चलो ना जी। फिर तो इंडिया की मोदी जी का स्लोगन ही मेक इन इंडिया का खत्म हो गया। अगर हम तो उनको भगाएंगे यहाँ से भी भैया, व्हाई नॉट वी इम्पोर्ट इतना हो रहा है जी। वेन एवर क्वालिटी इज सेम वो काम करवाएंगे, ना कि हम अपना लोकली OEM करें। ओके वो OEM हम एक्सपोर्ट में करेंगे जैसे कोरिया करता है। ओके और सर लास्टली अब जो मार्जिन नंबर है आपका एक ही साल है जहाँ 20% मार्जिन आया है, वो FY21 है, अदरवाइज यू आर 17% मार्जिन। नहीं यार वो तो आप एक चीज लेके चलो ना, वो तो सबको पता है। दुनिया तो बर्बाद होगी जैसे इन सालों में। इस साल की बात कर रहे हैं हम तो फिर भी कंफर्टेबल रहे हैं। कितना कोरोना रहा आप लेके चलो, कितनी टोटल सैलरी भी पेड, हमने तो किसी को छोड़ा भी नहीं तभी भी। अब तो देखो मार्जिन इंक्रीजिंग डे बाय डे। नहीं तो प्रश्न ये है सर, ये शुड वी अज्यूम के 20% मार्जिन वापस आएगा वंस यू आएगा आपके फिर आपका बिजनेस 17-18% वाला ही है? नहीं आप ये क्यों सोचते हो? तो पहले आया, अब क्यों नहीं आएगा? ओके अब तो जैसे सेल बढ़ेगी एक्सपेंसेस कम होंगे, रॉ मटेरियल प्राइस वो तो अब टोटल प्रोपोर्शनेट तो इलेक्ट्रिसिटी कोल कोई चीज प्रोपोर्शनेटली तो लगेंगी ना ये अपने आप डाउन आएगा। फाइनेंशियल कॉस्ट डे बाय डे डाउन आती जा रही है। स्टिल डेट फ्री हो जाएंगे इस साल, वो भी खत्म हो जाएगी। तो अपने आप ये चीजें रेवेन्यू को बढ़ाएंगी ना जी। तो आपके जो खर्चे हैं सर you will have a same expense number for 30-40% higher top line, any employee cost? तो थोड़ी सी बढ़ेगी, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ज्यादा नहीं बढ़ेगी, राइट? तो होता ही है ना जी, कहीं भी उतनी बढ़ती नहीं ना, प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ती। ठीक है सर, ठीक है, अंडरस्टूड सर। तो आपकी अगर गुड विशेज इतनी रही तो जरूर सर हमारी गुड विशेज हमेशा है सर, हमेशा। फिगर आएंगी, फर्स्ट क्लास आएंगी फिगर, इससे भी ज्यादा जितनी आपने कैलकुलेशन लगाई है ना। आई होप सो इट शुड बी बेटर देन दिस। ठीक है सर, thank you very much sir. Thank you Manish and Manav, thanks. Thank you. We have the next question from the line of Rajesh Kumar Ravi from HDFC Securities. Please go ahead. Yeah, hi sir, good evening. Am I audible? Yes. Yeah, congrats on good set of numbers. Sir, I have a few questions. First, you mentioned that the surface business revenue you're targeting 100 crore for this financial year. Is that understanding right? Yes, up to 100 in this financial year. Okay. 8 months is still there. Correct.
And so, like, what would be your stable quarterly run rate? Maybe by third or fourth quarter you're looking at? करेक्ट, ऐसे होता है ना, जैसे मैंने बताया डोमेस्टिक मार्केट अभी ओपन हुई है हमारे लिए. There are 4 distributors already, not distributor C&F. Okay. You can check their availability of Granaxi, their Stylam brand. सेकेंडली एक्सपोर्ट मार्केट में कोई ट्रैवलिंग नहीं थी पहले, कहीं क्वालिटी सब लोग आने शुरू हो गए. करेक्ट. ये कंफर्म्ड ऑर्डर बिल्कुल, ये भी हम राइटिंग में भी दे सकते हैं. वी आर एक्सपोर्टिंग टू यूएसए ऑलरेडी स्टार्टिंग नाउ. उसने ब्लैंक ऑर्डर देने शुरू कर दिए, भी ओपन ऑर्डर ओपन. जब 1-2 महीने 3 महीने और लगेंगे, जब जंप लगना है. व्हेन देयर इज ए मार्केट इज देयर, machine की capacity is there, quality is established, price is moderate or competitive, then why we cannot achieve then? Super. So what is the in subsequent years any top line number you have in mind for this business? ये देखो पता क्या है, टॉप लाइन तो जितनी कंजर्वेटिव फिगरें रहेंगी ना उसका ज़्यादा अच्छा लगेगा. टॉप लाइन तो हमने तो अपनी कैपेसिटी बना ली है 400-500 करोड़ की. ये कब अचीव होती है? Yeah, for the surface business you're saying. Yes. Potential is 400-500 crore. मेरे को अभी पूछा था उन्होंने, कहना why you put a new machine when पहले दूसरी लगाने में 1.5 महीना लग जाएगा. वो तो हमें पता है, it will be fulfill very soon. तब सोचेंगे, तब तक तो मार्केट फिर चली जाएगी. करेक्ट. And margin profile कैसा है सर for 100 crore top line for this business and for a 400 crore top line? देखो जी, उसमें पता क्या है, मार्जिन के बारे में भी मैं ना कुछ नहीं अभी. उसका रीजन ये है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा रॉ मटेरियल सब्सिट्यूट मिलते जा रहे हैं इंडिया से. जो इम्पोर्ट कर रहे थे हमें इंडिया का हिंडाल कोई मिल गया. सब्सिट्यूट मिलके ना जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑटोमेटिक मशीन है, कोई बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व नहीं है, तो मार्जिन भी ना, जैसे हम लैमिनेट्स में क्वेश्चन आपसे पहले करते थे, ऑल चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं, सेम चीज़ वहाँ होगी. ओके. So you are expecting 15 to 20% EBITDA margin if you cross 100 crore top line? सही बात पकड़ ली, बिल्कुल ठीक है. Okay. And sir, another question is on the laminate margin. I see your contribution margin FY20 आपका 46% contribution margin था. FY22 and first one Q में 43% EBITDA आपका contribution margin है. You are looking at EBITDA margin improving to from 15 to 20%. So, do you expect this to be driven by contribution margin reaching of 47-48% sort of number? कहाँ से देख रहे हैं वो EBITDA margin expansion? नहीं, वो तो आ जाएगा ना जी. देखो आप, जो प्राइसेस इंक्रीज हुई है, मैंने पहले भी बताया, वो हमारे पास तो उसका अभी तक इफेक्ट ही नहीं आना शुरू हुआ डिक्रीज का. ओके. ऑल ओवर रॉ मटेरियल फ्रॉम द ओल्ड प्राइसेस. करेक्ट. हमारे को आ रहा है अभी EBITDA बढ़ा है, वो तो रेवेन्यू जनरेशन की वजह से बढ़ा है, सेल की वजह से खर्चे रिड्यूस करने पे. ओके. समझ गया नहीं? So what you are saying, the benefit of the lower raw materials is still to flow in your contribution margin. Absolutely correct. And जैसे जैसे रेवेन्यू और बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, ऑपरेटिंग लिवरेज रहेगा. वो तो सारे कर चुके हैं. करेक्ट. This will increase the EBITDA margin. And laminates में what is the revenue guidance you are looking at for FY23? What means revenue total turnover? Turnover for FY23 you are looking at? आप जैसे समझो ना, जितनी हम अब की है, आप इसको ही अगर हम नोट इंक्रीमेंटल होगी पर हम ना भी करें, मेंटेन कर लें, देन यू कैन मल्टीप्लाई प्लस करा लें, यू कैन अंडरस्टैंड. So around 1,000 crore का top line हो सकता है. This is what. Yes. Okay. And that is where almost 1,000 crore versus 660 crore you are looking at 50% plus top line increase this year. वो तो आपकी फिगरें ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा क्योंकि नहीं, ठीक है. But just on the conservative side you are targeting, given that Q1 is a low base number. इतना ज़्यादा इसमें कुछ आंसर नहीं दे सकता, बट यू आर राइट, जो कैलकुलेशन लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं. Okay sir. Great sir. Thank you. All the best. Thank you sir. Thank you very much. Thank you. We have the next question from the line of Rishabh Bothra from Anand Rathi. Please go ahead. Hello. Please go ahead, sir. Am I audible? Yes.
So basically wanted to understand, since there is a large opportunity in India, how are we different from the existing players in laminate business? And since global markets also you have penetrated well, but what's the industry size for global markets in laminates, and how soon can we double or triple our capacity and the revenue base? मैं पूरा एग्जैक्टली ना आपका मैं मतलब समझ नहीं सका, जैसे आपने पूछा पहले भी डोमेस्टिक मार्केट इज बिगर मार्केट, यस आई एम राइट? करेक्ट, मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, ग्रीन प्लाई है, ग्रीन पैनल है, ग्रीन लैम है, सेंचुरी है, तो हमारे प्रोडक्ट उनसे कैसे डिफरेंशिएटेड है? वो इतने पेनिट्रेट कर गए डोमेस्टिक मार्केट में, वी हैव नॉट बीन एबल टू डू नॉट एबल टू डू। हमने पहली बात तो हमने इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर इफ यू गो फॉर अदर मैन किसी कंपटीटर का विदाउट नाम नहीं ले रहा, वी आर ए यंग कंपनी, वी आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। हमें तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया था, फोटो भी है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। जो कंपटीटर होते हैं कंपनी, वो तो किसी 60 साल की हिस्ट्री है, बाबे ने काम किया, दादे ने किया, हमने तो खुद किया। फर्स्ट जनरेशन बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, 2 जवान मेरे साथ बैठे हैं। तो अब भी हमारा जो टाइम था, अगर हम इस जनरेशन में अब तक 1000 में पहुँच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। बराबर सर, अचीवमेंट है, नो डाउट अबाउट इट। बस मेरा यही होता है, डोमेस्टिक में हमने पहले इतना ज़्यादा कंसंट्रेट ही नहीं किया था। अब ये तो देखो ना, पर एक अच्छी बात तो अगर किसी कंपनी की इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन है, राइट, तो वो बेटर है। इंडिया तो मिल ही जाएगा, अभी मिल ही रहा है हमें। बराबर, पर प्रोडक्ट में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, या देयर इज सम डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन हो तो एक्सपोर्ट में तो डिफरेंशिएशन ज़्यादा लोग कर रहे हैं। वो भी हम केड़ा गल्फ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यूरोप में कर रहे हैं। ओके, अगर डिफरेंशिएट हो तो यूरोपियन तो बिल्कुल ही ना लें। Correct. Because what I sense, the other players are not so keen in export market as such. उन लोग का इतना एक्सपोर्ट है ही नहीं। How you can say, आप कैसे कह सकते हो कीन नहीं है? क्या मैं ये कहूँ उनको मिलती नहीं है मार्केट, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, ओके ओके। It is a strategy of every company, you can say. Right. और सर इंडस्ट्री साइड अगर ग्लोबली अगर आप बताना चाहें क्या है साइज, और वेयर डू वी स्टैंड? पता है हमें 2500 करोड़ की थी लास्ट ईयर। इस साल का आई कैन नॉट से राइट नाउ कितनी होगी। दिस इज यू आर सेइंग ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्री साइड? नहीं, ग्लोबल फ्रॉम इंडिया और टोटल ग्लोबल? टोटल ग्लोबल सर। नहीं यार, हमने तो कभी भाई मेरे डाटा डूटे लिए नहीं, बहुत बड़ी। तो हमारा क्या मार्केट शेयर होगा इंटरनेशनल प्लेयर में? शेयर तो बहुत कम होगा, पर वैल्यू वाइज मेरे को पता है लास्ट ईयर 2400 to 2500 इन फ्रॉम इंडिया एक्सपोर्ट टू ग्लोबली लैमिनेट्स। और सर जहाँ तक मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लैमिनेट यूजली सरफेस ऑफ प्लाई पे लगता है, एमडीएफ में भी यूज होता है, या हाउ इट व्हाट द ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉर लैमिनेट? कहाँ यूज हो सकता है? क्या क्या? नॉट ओनली लैमिनेट्स में कम्पैक्ट लैमिनेट्स भी आ जाता है, एक्सटीरियर ग्रेड भी आ जाता है, क्यूबिकल्स भी आ जाते हैं, उस टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ। आजकल तो एप्लीकेशन एंटी फिंगर आ गया, हाई ग्लॉस आ गए, डिफरेंट प्रोडक्ट आ गए इसमें। दो आर बेसिकली लैमिनेट ही है, बट हाई मार्जिन हाई वैल्यू प्रोडक्ट कैटेगरी हो गया, करेक्ट? हाँ, हम तो दूसरे तो अनऑर्गेनाइज्ड इंडिया में तो 300 फैक्ट्री है ना जी, सारी ही लैमिनेट्स बना रही है, गाँव में टाउन्स में वो बेच ही रहे हैं। ओके। और सर 2 और सवाल है मेरे। एक तो जो आपने बताया कि अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो देयर इज अनऑर्गेनाइज अपॉर्चुनिटीज एज वेल इनऑर्गेनिक ग्रोथ का, एक्विजिशन और कुछ क्या चीज़? आइदर मैन्युफैक्चरिंग। आपने बोला अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है, तो इज देयर इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आइदर इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और सम ब्रांड? ब्रांड तो अब तो जैसे जैसे इन्होंने जीएसटी गवर्नमेंट ने चलाई है, ऑर्गेनाइज अभी भी कम होते जा रहे हैं कंपैरेटिवली, नॉट मच टैक्सेस। मैं तो कहता हूँ सबको अगर सही टैक्सेस पे करें तो फिर तो शायद अनऑर्गेनाइज रहे ही ना। बट ये पुराने जो ब्रांड थे ट्रिप्लाई या यूनिप्लाई, जो कि अभी आज के डेट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सेल्स के हैं, उनका ब्रांड वैल्यू होगा या उनको एक्वायर करके भी फायदा नहीं है? आर वी ऑल्सो एंटरिंग इनटू अदर? ये नहीं है, किसी ने हमने तो पूछा नहीं, हमें तो अपने ब्रांड का पता है। नहीं, अपना ब्रांड तो डेफिनेटली है ही है, बट अगर अदर सेगमेंट में जाना चाहें, लेट से प्लाई में जाना चाहें? नहीं, वो तो प्लाई में जाने की इसलिए जरूरत नहीं है ना। अगर हम जाना चाहें प्लाई में, जा रहे थे, वी पुट इन होल्ड,
क्योंकि देयर आर मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज बेटर वे, तो हम अपना ब्रांड बनाएंगे स्टाइलम प्लाईवुड स्टाइकोल, देन व्हाई शुड वी स्टाइप्लाई, व्हाई वी विल बाय योर ओल्ड ब्रांड। और सर एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड में आप क्या डायरेक्शन देते हैं, किस तरह से? अभी हमने उसके लिए कभी सोचा नहीं है, हमारे को वी हैव मोर अपॉर्चुनिटी, जैसे पहले हम इसकी सैचुरेशन ले आए, नेक्स्ट ईयर देन वी विल गो फॉर अनदर प्रोडक्ट। और नियर फ्यूचर में कोई फंड रेजिंग प्रोग्राम और फंड नहीं, कोई नहीं, फंड नहीं, कुछ चाहिए नहीं। अगर इतना बेटा आता गया तो हम तो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे ना पार्टनर में। ठीक है सर, और फर्दर क्वेश्चन रहने से मैं वापस क्यू में आता हूँ। आ जाना। थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक गोइंग अहेड। Thank you. We have the next question from the line of Nishan Jain from SNJ Investments. Go ahead. So the participant has lost their line. We will move to the next question from the line of Mihir Dhami from Lucky Securities. Please go ahead. So, the 40% capacity increase which you are going to do, how much time it will take to come on stream? तो कितने टाइम में आ जाएगी? Within this financial year, end of this financial year आ जाएगी। Okay. And current plant में how much can we expand the capacity? वो तो मैंने पहले ही बताया था ना, जैसे इस दोनों लाइनों को मिला के we can go up to 1,500 up to crore from this total operation. ठीक है। And if we are done greenfield capex, मतलब greenfield capex में capex टर्न्स कितने बैठते हैं? क्या चीज़ है ग्रीनफील्ड? क्या मतलब नए प्लांट में कैपेसिटी डाली तो उस पे एसेट टर्न्स कितने बैठते हैं, मतलब उसमें कितना रेवेन्यू बन सकता है, कितने इन्वेस्टमेंट पे? लेमिनेट करने हैं प्लांट? हाँ, वो तो डिपेंड करेगा ना, हाउ बिग साइज, हाउ मेनी प्रेसेस यू हैव, विच क्वालिटी यू वांट। जैसे अब हमारी 80% मशीन आर इम्पोर्टेड मशीन, इंडियन लगा लोगे आप, वो तो कोई कैन नॉट बी एक्सप्लेन राइट नाउ कितना होगा। तो 50 करोड़ में प्लांट लग जाएगा, 500 में भी। हेलो, जस्ट वन मोर क्वेश्चन, वेयर आर योर डोमिनेंट इन इंडिया? मतलब इंडिया में आप किस किस जगह पे सप्लाई करते हो? आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहाँ पे स्ट्रांग है? हेलो हेलो, distribution network south mein we are good strong. Basically if we see the Indian domestic market, it is dominated by first is south as a whole, the market size for a wood panel industry. First is south, second is west, followed by north and east. So we are following the same trends. We are quite fast, quite strong in south, and second north, and then west and east. So how do we rank in the Indian market, price wise and revenue wise as well? Rank now, it is very hard to say because there is in Indian market there are only few organized players who are doing genuine full billing system work. So the thing is, overall I think we are in right now top 10, but looking forward we will be a major challenger. Okay, all right. Thanks. That's all. Thank you. Ladies and gentlemen, due to time constraints, that was the last question, and we will now close the question queue. I would like to hand the floor back to Mr. Ashish Poddar for closing comments. Please go ahead. Yeah, thank you everyone for joining us today. Thank you the management of Stylam to giving answers to all the questions. I wish all of you a very good day. Thank you so much. Thank you. Thank you, gentlemen. Ladies and gentlemen, on behalf of Systematics Institutional Equities, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.